अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एसजे पेपर्स और एसजे थॉट्स की तरफ से केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर्स और केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मैट्रिक के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स हैं या फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स। वो बच्चे जो कि सप्ली का इम्तिहान दे रहे हैं इस दफ़ा, वो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह तैयार करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे इनको कामयाबी मिलेगी और बहुत ही कम वक्त में वो अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल एसजे थॉट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली कोई भी वीडियो, कोई भी एजुकेशनल न्यूज़, कोई भी बुक्स या कोई भी नोट्स आपके साथ शेयर किए जा सके। तो सबसे पहले केमिस्ट्री पेपर्स की तरफ चलते हैं और उसमें हम डिस्कस करते हैं। जो केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ सक्रोज एंड स्टार्च। Number 3, what is the principle of Solvay's process? Number 4, what do you know about oligosaccharides? Number 5, write the source of acids. 6, write down 2 properties of acetylene. Write down the names and formulas of 2 mineral acids. Number 8 पे है, why CO2 is called greenhouse gas. Number 9, name the various metallurgical operations. 10, what is jaundice? 11, define the catenation. 12, write the chemical equation of preparation of dichloromethane by methane gas. 13, what are minerals? 14, what is difference between atmosphere and environment? 15, write 2 uses of pH. 16, define chemical equilibrium state and dynamic equilibrium state. 17, describe the denaturing of proteins. 18, how can we measure pH of a solution? What is meant by halogenation of alkenes? Give an equation. Write down 4 advantages of Solvay's process. Which type of relation does not do to completion? Differentiate conjugate acids and Lewis acids by an example. Write condensed formula of any 2 hydrocarbons. Why non-polar compounds are insoluble in water? What is active mass? Give its unit. What is meant by acids? How water dissolves sugar and alcohol? How CO is an air pollutant? Write down the 2 disadvantages of agricultural effluents. How did Wohler prepare urea? Write its chemical equation. Why alkenes are called olefins? How is temperature of atmospheric maintained? Identify the primary and secondary pollutants from the following: SO2, CH4, HNO3, NH3, H2SO4 and O3. Write 2 uses of vitamin D. How ammonia is recovered in Solvay's process? What is meant by condensed formula? Give an example. How are alkyl halides reduction yani reduce? Define alicyclic compounds. Give an example. Differentiate between coal tar and coke. Write causes of water pollution. Define acid and base. Give examples of each. What is capillary action? How does washing soda Na2CO3 soften water? Describe the characteristics of polysaccharides. State important use of each: chloroform, carbon tetrachloride. Number 46 है, write equation of forward reaction between hydrogen and iodine. 47, give the characteristics of monosaccharides. 48, which elements are found in proteins? Write source of proteins. 49, describe the use of petroleum ether. 50, write down 2 characteristics of fats. 51, what do you mean by greenhouse effect? How sodium zeolite softens water? What is importance of vitamins? Write any 2 uses of sodium silicate. What is meant by industrial effluents? Give the name and formulas of 2 ores of copper. Write the equation for making ammonium carbonate in the manufacturing of urea. Why are the flood risks increasing? What is global warming? Write its effects. Define the anode mud. Write the source and uses of lipids. Describe 2 methods for the preparation of alkenes. Explain reversible reaction with the help of graph and examples.
Number 64 है what is meant by air pollutants. Write the names of 2 primary pollutants of air. 65 है write source of air pollutants. Describe the process of froth flotation. Explain electromagnetic separation. Explain the water pollution because of industrial waste. Write any 3 uses of acetylene. Write 3 uses of salts. Describe 3 methods for preparation of soluble salts. Define and explain with example neutralization. What is homologous series? Write down the properties of its organic compounds. How metal is refined? Write in detail. Write down percentage of carbon, properties and uses of different types of carbon. तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस हैं जिनको आप अच्छी तरह तैयार करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसी में से आपके पेपर्स में भी क्वेश्चंस आएंगे। तो तब इम्तिहानात के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।